readers, a very warm welcome to today's book reading section. So let's start our session with a small calming meditation. Sit back comfortably. Roll back your shoulders. Straighten your spinal cord. Wherever you are, relax your hands in your lap and close your eyes. Concentrate between the center of your forehead, exactly the point between your eyebrows. Shining star between your eyebrows. Now this star is the guiding light. This star is none other than your own soul, full of God's virtues, right, love, powers, blessings, wisdom, purity, peace, happiness. Is a part of the Supreme Soul, and hence it gets filled with all the virtues from the Supreme Being Himself. Take a deep breath in and fill your soul with full of God's purity. So, I am a pure soul, removing all the breakages, bondages, and negativity from myself and from my surroundings. I bring in God's light in my as I move forward in life. I am getting a lot of lessons and unexpected situations that are affecting me a lot. But I know that this situation shall pass too. So I don't attach myself to any situation in life. I am a detached observer, witnessing everything. I release all resentment and negativities with my exhale. With the wisdom that everything is happening for my benefit, I am calm, composed within myself. These situations are like changing seasons in our life. It's not permanent. It shall pass too. With this knowing, I tolerate what I cannot control, but I don't give away my power. I always try to get the situation better with my actions.
And that's my superpower. God has blessed me with amazing gifts in life, and I cherish them. I'm grateful. Thank you. Thank you. Everything is perfect, whole, and complete in my life. Sure. With this awareness, then blink your eyes open. And let's get back to reading. Let me share my screen first. So today we will start from God with a calculating gaze. Apply this new understanding of body life. 2. The study of historical events such as the Holocaust, factors such as lifestyle, underlying health conditions, diet, and genetic predisposition should be examined in the affected population. Such an analysis could provide deeper insight into how 6 million Jews came to be subjected to torture and execution in concentration camps. Once food, medicine, and other essential resources were cut off in these camps, people naturally became extremely vulnerable. However, the root causes behind their capture and transfer to these camps would be their primary concern. Thought causing guilt. Figures like Hitler, psychopaths with destructive agendas were placed in power lines as a way to manifest negative martyrdom of the Jewish community and the world at large. It wasn't only the Jews who suffered during that period. The world as a whole had been ravaged by two global wars. Rapid lifestyle changes brought on by the modern industrial age, reckless consumption of alcohol and other harmful substances, and a growing detachment from naturally balanced behavior all contributed to widespread decline in general health and welfare. But with an unsung shock, the luxurious fast-paced lifestyle embraced in the West, driven by the desire to enjoy life to the fullest, undoubtedly invited greater instability for the population as a whole. None of this, of course, justifies the horrific cruelty inflicted by Hitler's Nazi regime on millions of innocent people, but exploring these deeper hidden influences may help humanity prevent similar disasters in the future, whether they occur at the political or personal level. With this awareness, we can easily stop future Hitlers from rising and building societies towards lasting harmony, where iron domes can finally rest because there are no more incoming threats to intercept. However, Holocaust का एग्जाम्पल है जबकि थाउजेंड डेज के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में और उन लोगों को बेसिक नेसेसिटीज में टाइम आया था बॉडीज पे रिफ्लेक्ट करने के लिए बोल रहा है नहीं कि ऐसा क्यों नहीं है चेक करना चाहिए उस टाइम पे लोगों की बॉडी लगता है वो इतना नेगेटिव हो गया था तो बहुत कहते हैं कि जो हिटलर है ऐसा साइकोपैथ है डिस्ट्रक्टिव एजेंडा के साथ ऐसे ऐसे लोगों को पागल बनाना बहुत का ही प्लान होता है ताकि बनी नेगेटिव बॉडी लोगों का मैनिफेस्ट करके दिखाता है तो इस तरह से उस टाइम दो ग्लोबल वॉर्स में हुए थे वर्ल्ड वॉर वन और टू ये सब कुछ यही दिखा रहा था चलो नेचुरल बेस से अलग हट करके
alcohol, or other harmful substances के consumption पे और चले गए थे। उनके लाइफस्टाइल में रैपिड चेंजेस आने लगे थे। इस वजह से उनका बॉडी लाइफ प्रिमिटिव होता गया। उनके साथ में ये सारी चीजें भी होती गई। तो गॉड यहाँ पे ये भी समझा रहे हैं कि अगर हमें अवेयरनेस आ गई है तो हम फ्यूचर हिटलर्स को रोक सकते हैं। अगर हम अपने बॉडी तक का ध्यान रखेंगे तो फिर ऐसे लोग पावर में नहीं आएंगे और सोसाइटी में फिर हार्मनी में रहेगी। और जो आयरन जोन आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, वॉर्स भी यूज होते हैं, तो वो भी फाइनली टेस्ट कर पाएंगे काफी डर नहीं। With a satisfied expression that this is so remarkable God, the effects of negative body that are favorable. We शांत रह रहे हैं कि ये तो बहुत remarkable है। Negative body love के जो effects है वो सारी जगह दिख रहे हैं। Positively with a thoughtful expression. Another thing of my interest is the topic of European colonization. Most of the populations that encountered colonial invaders were already at the height of negative borderland due to various lifestyle factors. These settlers they introduced new harmful substances, practices, and ideologies, further weakening the physical and spiritual well-being of these communities and exacerbating their misfortune. India, one of the world's oldest and most spiritually advanced civilizations, was also in a period of cultural and spiritual decline, which came into contact with colonial settlers, thus contributing nearly 25% of global GDP. India's share was reduced to just 2% in 200 years of British colonial rule. For positively, however, the real cause was far greater. The origin of its spiritual and cultural foundations, including Sanatana Dharma or the eternal way of life, which was deeply rooted in the very practices we discussed now. Even the Native Americans, referred to as Red Indians by early colonial settlers, were misidentified as Indians because they were seeking India, having heard of its vast wealth this time. In today's terms, trillions of dollars were looted, and millions of indigenous were lost to the colonial rule across the globe. It is clear that during the peak of career, many internal practices were lost in India and beyond. Genetic and imperial depletion of Eastern and indigenous cultures by inducing the European colonial powers in the process. British colonial example दिया मैंने कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जैसे कि आप जानते ही हैं ब्रिटिशर्स पे 200 साल इंडिया पे राज किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स आने से पहले इस पूरे वर्ल्ड का एक चौथाई हिस्सा यानी 25% जीडीपी अकेला इंडिया का यूज कर रहा है। पर ये 200 साल के ब्रिटिश राज के बाद में ये 25% से घट के सिर्फ 2% ही रहता है। लेकिन जो रियल लॉस था वो था हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे सनातन धर्म का जो इटर्नल प्रैक्टिसेस है जिनके बारे में हम इस बुक में डिस्कस कर रहे हैं। पहले लोगों की लाइफ स्टाइल भी ऐसी हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स आने के बाद में ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, इंडिया को स्पिरिचुअल पार्ट से हट गए। तो गॉड इन्हीं के समझा रहे हैं कि कलयुग की पीक पे यानी कलयुग के चरम से जो इटर्नल प्रैक्टिसेस तो इंडिया में भी थोड़ी इंडिया से भी और भी ज्यादा हो सकती है भाई। तो जो लोगों के हार्मफुल लाइफ स्टाइल होते हैं, पुअर डाइट होते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होते हैं उनके बॉडी के अंदर, ये सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे बच्चे में एनर्जेटिक और मटेरियल डिप्रेशन होता है, कमी होता है उन सब चीजों में। while enriching the European colonial powers in the present. जो हम हुआ ब्रिटिश राज में था कि इंडिया को वीक होते जा रहा था, यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स बढ़ते जा रहे थे और लुकिंग फॉरवर्ड European colonial powers systematically dismantled traditional educational systems, deliberately erasing centuries worth of indigenous history, culture, and knowledge.
In their place, they imposed colonial narratives designed to legitimize domination and suppress resistance. Propaganda so deeply ingrained that its effects are still felt today. Ishan, there's an African proverb that captures this truth. Until the lion learns to ride, every story will glorify the hunter. But the European colonial power is वो systematically dismantled the traditional education system में और उसने इरेज किया जो सेंचुरी से सदियों पुराना हमारा जो ज्ञान होता है किस तरह से हिस्ट्री कल्चर नॉलेज को करता है उन सबको मिटा के रखा है उन्होंने अपना लोग एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया था और उस प्लेस में उन्होंने कॉलोनियल नैरेटिव्स को डिजाइन इस तरह से किया कि वो डोमिनेशन को एक्सप्रेस कर पा रहे थे लेजिटिमाइज कर पा रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो लोग इंडिया पे डोमिनेट कर रहे हैं वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं ये सही है और रेजिस्टेंस को दबाते थे जो लोग मना करते थे उसको दबाया करते थे ये प्रोपेगेंडा इतना डीपली इंग्रेन्ड था कि इसके जो इफेक्ट्स थे अभी तक हमें पता चलता है महसूस होता है तो गॉड ये समझा रहे कि कैपिटल ड्रॉपआउट के हिसाब से तो बहुत सच्ची बात लिखी गई है कि जब तक हिरायन स्टोरी लिखना नहीं सीखता था तब तक स्टोरी में मेंटर को ही ग्लोरीफाई करते हैं मेंटर यानी शिकारी उसी को गौरव आरोपित करते हैं वो जब तक कि जो एक शेर में वो स्टोरी लिखना नहीं सीख जाता क्योंकि जो स्टोरी लिखेगा वो खुद को तो ग्लोरीफाई करेगा ही ना इसीलिए God causing gifting, whether it was the Aboriginal Australians, Indians, Africans, or Native Americans, I orchestrated their downfall based on the governing rules of body. Yet this does not in any way justify the horrors committed driving colonial influence. Ishan, I am entrusting you with the responsibility of emphasizing that these communities for the culture, traditions, and dignity they lost, and for helping them to restore their honor and rightful connection to their ancestral lands. और यहाँ पे पॉज करके ईशान को समझा रहे हैं कि गॉड ईशान पर भरोसा कर रहे हैं कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन कम्युनिटीज के लिए उनके कल्चर ट्रेडिशनल डिग्निटी जो उन्हें खो दिया उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईशान है अभी सबकी हेल्प करनी फिर वो अपने अपने ऑनर को अपने राइटफुल कनेक्शंस को रिस्टोर कर सके ईशान स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस these communities once led on to the nirvanic path will reclaim their last and the restless spirits of our ancestors stolen and shattered by expulsion. Ask no peace and swear it for whatever it takes, I will ensure that it happens. Krishnan ने accept कर लिया और वो गॉड से प्रॉमिस पे कर रहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा जैसा गॉड करेगा God with a victorious girl. Interestingly, if you examine the conquest of figures like Alexander the Great and Genghis Khan, you will find that their campaigns have minimal impact on the Indian subcontinent. Alexander's army, though victorious in the west, halted at the banks of the Ganges River in Punjab. Intimidated by the reputation of powerful Indians further east, particularly the formidable Nanda Empire and the vast army of Mughal, mutinied, refusing to march deeper into India. Paul, Paul Similarly, Genghis Khan, despite his sweeping conquest across Central Asian parts of the Middle East, never invaded the north of India. Historical accounts suggest that the intense heat of the Indian plains was unsuitable for his long-term camp. Relied heavily on their steppe
horses. As a result, his forces remained left in Ghanaian foothills and never descended into the Gangetic plains. From a bodily perspective, it becomes evident that the lifestyle practices followed began that time by Latin sages and supreme harm living vegetarianism, yoga and meditation, predicting them from these potential habits. यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जब इंडिया पूरी तरह से प्रोटेक्ट हुआ गया था। एक तो अलेक्जेंडर के टाइम पे एक चंगेज खान के टाइम पे दोनों ने इंडिया को पूरी तरह से इन्वेड नहीं किया था बच गए थे तो गॉड कह रहे हैं कि उस टाइम पे जो सेजेस थे उन एनलाइटेड सेजेस की बात मान करके जैसे लाइफ स्टाइल लोग प्रैक्टिस करते थे धार्मिक लिविंग इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग जीते थे वेजिटेरियन थे योगा मेडिटेशन करते थे इन सारी चीजों ने उनके बॉडी को भी अच्छा पॉजिटिव बनाए रखा और उन्हें प्रोटेक्ट किया था इन पोटेंशियल पैरामीटर्स Ishan, speaking with excitement, I hadn't seen things from this perspective before, God. Thank you so much. So, Ishan, can I from this perspective for the Sultani God? Thank you so much. God, with a satisfied expression, Ishan, this is neither the first nor the last. I will receive these eternal practices of earth. I part of the eternal cycle of ages as moral and spiritual. Take sets it. These timeless ways slowly fade. I determine to reset the march of time with the force of the last flow still linger in indigenous cultures well. Take, for example, traditional Indian culture. When someone in the family passes away, close relatives often switch to a vegetarian diet and avoid public gatherings or celebrations for a while. From the perspective of body love, this isn't just tradition, it carries deep scientific value. Death is a serious negative event, and by abstaining from meat and dietary indulgences, it will not only honor the departed soul but also help calm the agitated body death, reducing the chances of further misfortune. Ishan, with a respectful nod, now we understand the true meaning behind this practice. Thank you. God, gesturing enthusiastically. It's not just abusive lifestyles that trigger adverse events, environmental toxins, pestilential foods are also major contributors. Due to modern farming methods, even those following the seemingly healthy lifestyle will still suffer as the essential nutrients their body needs like magnesium are no longer present in adequate amounts. The earth is currently supporting far more than it can sustain naturally. In fact, synthetic nitrogen fertilizers are one of the primary reasons the global population can be sustained at its current level. But this comes at a heavy cost. The ecological damage caused by the expansion of land, agricultural land, and the ever-growing demand for food are all external manifestations of internal bodily deterioration. यहाँ पे एक और प्रैक्टिस के बारे में समझाया गया है कि जैसे क्लोज रिलेटिव के डेथ होते हैं तो यूनिवर्सिटी में फ्लैट पे शिफ्ट हो जाते हैं पर इस प्रैक्टिस का हमें मीनिंग नहीं समझ आता मैं इसका मीनिंग और नहीं समझाया कि डेथ अपने आप में भी बहुत नेगेटिव इवेंट होता है तो अगर हम उस टाइम में नेगेटिव कंज्यूम करें तो उससे नेगेटिव जो हेल्थ है वो और ज्यादा नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं प्रैक्टिस करना चाहिए और जब किसी डेथ होती है तो हम मेरी प्रैक्टिस करते हैं तो शांत क्या हुआ है कि मुझे अभी इस प्रैक्टिस के बारे में और अच्छे से समझ आया कि एक तो प्रैक्टिस की जाती है Possibly, humanity will seriously consider population control strategies such as adopting a one-child policy to prevent further ecological damage and ensure long-term and food security. However, such policies rarely gain acceptance in democracies where leadership is often driven by the need to please the masses even at the cost of long-term survival. Often compelled to create conditions that hinder the success of global population control policies became very limited relative. It associates the continued deprivation, continued destruction of the Earth's systematic
Synthetic ecosystems, these are not random disasters, they are outwardly reflections of an internal biological crisis with humanity. क्वेश्चन दे रहे हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका इकोलॉजी के ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ता है, एनवायरनमेंट पे प्रेशर पड़ता है कि तो और ज्यादा कल्टिवेट कर पाए ताकि सबका पेट भरे, सबके रहने के लिए जगह चाहिए होती है तो फॉरेस्ट कट होता है, तो इस तरह से काफी कुछ हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ है। और यहाँ पे गॉड समझा रहे हैं कि अगर हम अडॉप्ट कर ले वन चाइल्ड पॉलिसी को तो हम इकोलॉजिकल डैमेज को और ज्यादा होने से बचा सकते हैं, लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे ये। तो उन लोगों लोग सारा एक्सेप्ट भी करते हैं पॉलिसीज को डेमोक्रेसी में, क्योंकि लीडरशिप को डेमोक्रेसी में मासेस को प्लीज करके फिर भी जुड़ा करता है, रहे या ना रहे। ये रैंडम डिजास्टर्स नहीं होते, ये आउटवर्ड रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे इंटरनल बायोलॉजिकल क्राइसिस के लिए। Ishan, looking sorrowful. I understand God is truly sad. It is going on. तो शांत कह रहे हैं, मुझे समझ आ रहा था ये बहुत ही ज्यादा दुख वाला दुखपूर्ण है। क्या चल क्या रहा है? God, looking disappointed. Doctors apply typically diagnose and treat patients based on lab reports, clinical systems, and human as health issues. However, the others overlook they often overlook the crucial insights that can be drawn from wider resonance and a person's past and present pattern of popular conferences. Understanding a patient's bodily status in terms of popular conferences and correlating it with lifestyle habits is crucial in identifying the root cause of a condition and achieving genuine bodily recovery. Serious negative occurrence, which as near in some cases, patients will not present even specific health complaints, but say medical advice to understand why they are experiencing a string of unfortunate occurrences, issues that may require strategic dietary changes or lifestyle adjustments. This new knowledge highlights a growing role for healthcare professionals not only to treat illness but also to enhance a person's overall happiness, safety, success, and well-being. By addressing the root cause of these events, doctors can play a vital role in
improving the quality of life in ways previously overlooked. So यहाँ पे थॉट डॉक्टर्स के लिए कहना है कि अगर डॉक्टर्स सिर्फ पेशेंट की बॉडी में सिम्टम्स ठीक करके उस अकॉर्डिंग के इलाज बताएंगे उसकी जगह उस पर रूट कॉज जानने होगी फिर उन्हें उनके इंटरनल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए देंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ उनकी वेलफेयर नहीं होगी बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी बहुत आईब्रोज लिफ्टिंग थॉट this highlights another crucial issue. It is widely recognized that many medical treatments do not fully heal an illness. They often only manage the symptoms. This is true for conditions such as mental illness, diabetes, high blood pressure, digestive disorders, and many others. As a result, negative body level manifestations tend to persist because the root causes remain unsolved. Despite the suppression of symptoms, these unresolved internal health issues may continue to manifest as problematic occurrences in a person's life. Conflicts with close family members, difficulties in career progression, or even health issues affecting loved ones. तो कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं तो आप इलाज होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को मैच नहीं होता है पर रूट कॉज एड्रेस नहीं मिलता इस वजह से उस पर्सन की लाइफ में नेगेटिव ऑकरेंसेस प्रॉब्लमेटिक ऑकरेंसेस चलते रहते हैं जैसे कि क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना करियर प्रिपरेशन में डिफिकल्टी या हेल्थ इश्यूज लव्ड वंस को अफेक्ट करने लग जाए वैसा कुछ what wasn't fulfilled. Individuals were truly healed through a holistic blend of modern medicine, lifestyle adjustments, and spiritual. These negative occurrences would begin to disappear, serving as evidence that the internal body disharmony had been corrected. When the body truly heals, relationships recover, reputation improves, and wealth flows. Therefore, effective treatment must go beyond short-term symptom suppression. It should integrate long-term strategies involving rehabilitation, lifestyle transformation, and targeted experimentation to genuinely address these chronic and otherwise unrelatable conditions. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल होगा जो सच्ची में अगर हील हो भी जाए तो ये किस तरह से वो होगा मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ में अपनी लाइफस्टाइल में एडजस्टमेंट लाकर के स्पेल हीलिंग करके ये सारी चीजें करने से जो नेगेटिव ऑपरेंसेस होंगे तो शायद हो जाएंगे उसकी लाइफ से और इंटरनल बॉडीली डिसहार्मनी भी सॉल्व हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी जब बॉडी सच में हील होती है तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो रिकवर होते हैं उस पर्सन की लाइफ उसकी रेपुटेशन बसती है वेल्थ आती है इसीलिए जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म सिम्टम को सप्रेस नहीं करते हैं सिर्फ सिम्टम्स को गायब नहीं करते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के साथ इंटीग्रेट करते हैं जिसमें कि न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन टारगेटेड स्पेसिफिक ये सब कुछ इंक्लूडेड है कंज्यूमर न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करना है अच्छी चीजें करनी है अपने डेली लाइफ में और स्पेल हीलिंग को भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि हम अपकमिंग चैप्टर्स में से पढ़ेंगे Ishan, starting with understanding. I understand God, a truly holistic approach to healing is required. तो ईशान कह रहा है कि मुझे समझ आ रहा है God, एक truly holistic healing approach की जरूरत है. God, with an enthusiastic tone. After prescribing treatment, doctors should gently remind the patient and their close relatives the problem and solution lie within you. The patient's illness is a body love occurrence, a manifestation of one or more degraded aspects of your physical state. The pathway to healing begins by affecting your body through nirvanic practices. It's also essential to recognize that the sciences that the success of any treatment is closely tied to the doctor's own lifestyle.
बट क्या है कि जब एक डॉक्टर ट्रीटमेंट बता देता है पेशेंट को, तो उसके बाद में उसे उस पेशेंट और उसके क्लोज रिलेटिव्स को जेंटली समझाना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में और जो सॉल्यूशन है, दोनों ही आपके अंदर नहीं है। जो पेशेंट की इलनेस है वो बॉडी ला परफॉर्मेंस की वजह से हुई है, जो कि उसकी बॉडी की फिजिकल स्टेट की मैनिफेस्टेशन है। बात टू हीलिंग कैसे स्टार्ट होगा, जब वो अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करेंगे। ये होता है कि हम रिकॉग्नाइज कर सके अपने ट्रीटमेंट के सक्सेस को। डॉक्टर को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि पेशेंट किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को, फिजिकल वाइटलिटी को, वेलबींग को ठीक करके अपनी पूरी इलनेस को खत्म कर सकते हैं। The so-called tolerable patients, they cries outside the ICU, paralyzed bodies, the dissection of decaying corpses in cold autopsy rooms, and the unethical medical system all are grim manifestations of their physical selves. Practices of studying and understanding of body love are poised to revolutionize medical practice. They hold the potential to restore mobility to the bedridden, heal spinal injuries, and countless so-called intolerable conditions, reverse aging, and ultimately reduce the immense strain placed on healthcare system by accident laws and natural disasters. अगर हम ऊपर वाले प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ में और कोई दिक्कत नहीं आएगी। What causing briefly? Because often believe that divinity is only about people. The ability to do things that superheroes can. The personal side of divinity lies in the fact that bodily wellness attracts life occurrences and positive thoughts allow us to manifest what we truly desire. Done with deep admiration. It's so apt, God, that with great power comes great responsibility. It's a great way to help you understand this. God, in a compassionate tone, but must understand that your external environment, vital resonance at any point in time, is a reflection of your internal bodily biology. God, in a compassionate tone, you must understand that your external environment is vital to citizens at any point is a reflection of your internal bodily biology. The health and efficiency of your organs, physical processes, vitality, nerve cells, neural pathways, and other aspects of your body
On the positive side, consider this. Someone with neural pathways tuned for music will naturally become a singer. Someone whose mind is wired for visual creativity will express themselves through painting. An individual with an engineering mindset will build or repair regardless of formal education. These are positive manifestations of complex creative activity that shape our talents, careers, and contributions to the world. They might seem obvious, but there is a great deal of quantum manipulation and performed to ensure these traits are expressed in the real world. यहाँ पे गॉड समझा रहा है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और वाइटल रेजोनेंस में क्या कनेक्शन है। वाइटल रेजोनेंस जैसे हमने जाना था कि एक ऑर्गन की वाइटैलिटी दूसरे ऑर्गन की वाइटैलिटी को किस तरह से अफेक्ट करती है, तो यहाँ पे न्यूरल पाथवेज का एग्जाम्पल दिया था कि जो लोग ट्यून्ड होते हैं म्यूजिक के लिए तो वो सिंगर बन सकते हैं। जिन लोगों के जो माइंड होती है वो वायर्ड होती है विजुअल क्रिएटिविटी को लेकर के, वो खुद को पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो इंडिविजुअल है जो इंजीनियर माइंडसेट का है, तो वो उसकी भले ही फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो लेकिन वो रिपेयर कर सकता है, बिल्ड कर सकता है। तो ये सब जो टैलेंट एरियाज होते हैं, वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो सब पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूरल एक्टिविटी। God, pausing briefly now, consider the negative side. Psychosis, cruelty, madness. These two are manifestations of adverse neural pathways. When left unchecked, they materialize in the real world as dangerous ideologies, abuse, violence, or criminal activity. Figures like Hitler were psychopaths with good discipline and bodily health attributed to his dedication to military service. This allowed him to reach influential positions as either internal dysfunction manifest as large-scale war, torture and destruction. और यहाँ पे उसका नेगेटिव साइड भी बता रहे हैं कि कुछ साइकोसिस होते हैं, क्रूरटी, मैडनेस, ये सब भी मैनिफेस्टेशन होती है रियल बात पे फीलिंग। और जब नेगेटिव बॉडी लग बहुत ज्यादा लोगों का हो जाता है तो उस टाइम गॉड इस तरह के मतलब को पावर में लेकर आते हैं जो कि एक तरह का मैनिफेस्टेशन भी होता है नेगेटिव बॉडी लगने का। और ये इंटरनल डिसफंक्शन मैनिफेस्ट होता है एज लार्ज स्केल बॉडी से बड़ी बॉडी। God with a weak smile, when mental health deteriorates or unresolved character flaws accumulate that create occurrences that externalize these internal issues of violence, toxicity, impersonal relationships, or clear positions of power. The only proper solution to tackle these negative manifestations is to heal the mind's pathways through spare healing and disciplined living. This is how harmony is restored from the inside out. One could say that life is a complex web of interaction shaped by triggers originating from the cells and organs of the body due to divine soul present in all living cells. यहाँ पे बॉडी वीक साइन के साथ क्या है जो मेंटल हेल्थ होती है लोगों की जो खराब होती है डिटेरियोरेट होती है अनरिजॉल्व उनके कैरेक्टर फ्लॉज होते हैं, कैरेक्टर में जो कमियां रहती हैं, ये सब ऑफरेंसेस भी गॉड क्रिएट करते हैं मतलब इंटरनल इश्यूज एक्सटर्नली दिखती हैं, फिर वायलेंस या टॉक्सिसिटी, क्रूअल पोजीशंस के तौर पे। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होगा कि इन नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को हम टैकल कर सकते हैं। इसको हम कैसे टैकल करेंगे? बाय हीलिंग। तो रिमाइंड्स पाथवेज थ्रू स्पेल हीलिंग एंड डिसिप्लिन लिविंग। तो स्पेल हीलिंग करके डिसिप्लिन लिविंग के साथ में इन चीजों को हम लोग टैकल कर सकते हैं।